फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे क्रेडिट एनालिसिस का असेसमेंट ऑफ एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल भी अपन ने यहाँ पे क्रेडिट एनालिसिस का एक वीडियो अपन ने पोस्ट किए थे। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, ताकि क्रेडिट एनालिसिस के जो भी मैं एमसीक्यू यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू आपका पेपर इजी जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यू आपको वीडियो नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्रेडिट एनालिसिस में असेसमेंट ऑफ एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अप्रेजिंग क्रेडिट प्रपोजल सबमिटेड बाय एन एमएसएमई। देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है एक्सेसिंग द मार्केट पोटेंशियल ऑफ द एमएसएमई, सेकंड है वेरीफाइंग द कोलेटरल सिक्योरिटी, थर्ड है रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एमएसएमई एंड फोर्थ है इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द ओनर और प्रमोटर। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एमएसएमई। देखिए रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एमएसएमई help establish base understanding of its financial health, including profitability, liquidity, and solvency. Okay. Next, second, in accessing the creditworthiness of MSME, which of the following is a key indicator of its ability to repay debts? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास ओनर नेटवर्थ, सेकंड है डेट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड फोर्थ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर द लिवरेज ऑफ एमएसएमई एंड इंडिकेट इट्स एबिलिटी टू रीपे डेट्स। A high ratio may indicate higher financial risk. Okay. Next, third, when analyzing an MSME credit proposal, which financial statement is most critical for understanding cash flow? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सेल्स रिपोर्ट। आंसर है अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इनसाइट इनटू एक्चुअल इनफ्लो and outflow of cash, highlighting the MSME ability to generate cash to cover its obligation. Okay. Next, fourth, what role does MSME business plan play in credit appraisal? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शंस है, it provide information on business strategy, direction and potential. Second है it detail the owner credit score. Third है it replace the need of for the financial statement. And fourth, it ensure there will be no risk involved in lending. तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है फर्स्ट, it provide information on business strategy, direction and potential. Okay, देखिए the business plan outline the MSME goal, strategy and operations, helping the lender access company future prospectus and viability. Okay. Next, fifth, what is the primary risk factor access in credit proposal of an MSME? तो देखिए ऑप्शंस क्या है अपने पास, एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन, सेकंड है द क्रेडिट स्कोर ऑफ बिजनेस ओनर, थर्ड है द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड फोर्थ है द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। इसका करेक्ट आंसर है लास्ट फोर्थ, द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। देखिए की फैक्टर इन एक्सेसिंग क्रेडिट रिस्क इन cash flow projection as it reflects the MSME ability to meet future debt obligations. Okay. Next, sixth, which of the following best describe the concept of working capital in MSME credit assessment? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शंस है, टोटल असेट ओन बाय द बिजनेस, सेकंड है द टोटल अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ है द वैल्यू फिक्स एसेट लाइक मशीनरी। यहाँ पे थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, उसको ही बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट लिक्विडिटी अवेलेबल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड एक्सेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मेकिंग इट मेट्रिक इन क्रेडिट असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, when accessing the management team of an MSME, which aspect is more critical? तो देखिए अपने पास ऑप्शंस क्या है, their previous experience in the industry, second the educational qualification of the team, third the number of people on the team and fourth the geographical location of the management. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है their previous experience in the society is an aspect of most critical. देखो the experience of management team in the relevant industry
indicate their capability to handle challenges and lead the MSME toward profitability and growth. Okay. Next, 8. A higher current ratio indicate that an MSME. Answer is first देखो is highly profitable. Second has good short-term liquidity. Third is unable to pay its long-term debts. And fourth है high operational efficiency. तो यहाँ पे second जो है has good short-term liquidity क्या है correct answer है. देखिए high current ratio indicate the MSME has sufficient asset to cover its short-term liability, which is a good liquidity. Okay. Next, 9th, in credit assessment, collateral is primarily used to. तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, guarantee the repayment of loan in case of default. Second है improve the MSME credit rating. Third है reduce the interest rate for the borrower. And fourth है demonstrate the financial health of the business. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है guarantee the repayment of the loan in case of default called as a collateral. देखिए collateral provides security to lender, helping the reduce the risk of loss in case of borrower default on the loan. Next, 10th, what is the significance of credit history of MSME promoters in credit assessment? तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, it show the business future growth potential. Second है it indicate the willingness and ability of the promoter to meet financial obligation. Third है it directly affect the pricing of the loan. And fourth है it only reflect the owner personal spending habit. यहाँ पे देखो second जो है it indicate willingness and ability of promoter to meet financial obligation. ये क्या है correct answer. देखिए क्या बोला है, a good credit history reflect the promoter ability to manage debts and fulfill financial obligation which lower the credit risk for lender. Okay. Next, 11th, the concept of due diligence in MSME credit appraisal refers to. तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, the process of verifying the information provided by the MSME. Second है offering loan without any check. Third है setting the loan interest rate. And fourth है creating market strategy for the MSME. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास the process of verifying the information provided by the MSME, ये क्या है करेक्ट आंसर. देखिए due diligence is a process of thoroughly checking the MSME financial record, business plan, management structure and other key factor to ensure the accuracy and viability of the credit proposal. Okay. Next, 12th, a credit proposal is said to have high risk when. तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, the business is well established in the market. Second है the MSME has a low debt to equity ratio. Third है the MSME operates is highly volatile industry. And fourth है the management team has long tenure in the industry. यहाँ पे third जो है the MSME operator is a highly volatile industry. देखिए volatile industry pose higher risk as they are more prone to market fluctuation which can affect MSME ability to repay loan. Okay. Next, 13. Which of the following is a key indication of financial health of an MSME during credit appraisal? देखिए क्या ऑप्शन है अपने पास, number of competitors in the market. Second है profit margin and return on asset. थर्ड है नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड. एंड फोर्थ है टोटल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर. तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन असेट्स. देखिए प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन असेट्स आर क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ एन MSME financial health, solving its profitability and how efficiently it uses its asset. Next, 14. When evaluating the industry risk for MSME credit proposal, which factor is least relevant? तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. सेकंड है द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द इंडस्ट्री. सेकंड, थर्ड है द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. एंड फोर्थ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द MSME. तो इसका करेक्ट आंसर है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द MSME. देखिए industry risk is more related to the external factors such as market demand, regulations, competition rather than internal number of employees. Next, 15. A credit proposal is considered to have low risk if
तो देखिए ऑप्शन क्या है, द बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेटेड मार्केट, सेकंड है द एमएसएमई मैनेजमेंट हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड, थर्ड है द बिजनेस हैज नो कोलैटरल एसेट्स, एंड फोर्थ है द कंपनी इज न्यूली एस्टेब्लिश्ड विद नो ट्रैक रिकॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। ओके, द एमएसएमई मैनेजमेंट हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड। देखिए experience management reduce risk as they are more likely to effectively manage challenges and drive the business toward profitability. Next, 16. When performing a sensitivity analysis on MSME credit proposal, which factor would be excess? तो देखिए ऑप्शन क्या है, the potential effect of interest rate on MSME ability to repay the loan. Second है the impact of new competitor entering the market. थर्ड है द नंबर ऑफ यूनिट्स द एमएसएमई प्लान टू प्रोड्यूस, एंड फोर्थ है द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द एमएसएमई। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास, द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन द एमएसएमई एबिलिटी टू रीपे द लोन। देखिए सेंसिटिव एनालिसिस हेल्प एक्सेस हाउ चेंजेस इन की वेरिएबल like interest rate or input cost will affect MSME ability to repay the loan. Next, 17. The concept of credit rating in MSME lending refers to. Credit rating क्या होता है देखिए, the MSME position in the market. Second है the score indicating likelihood of repayment based on financial history. Third है the profitability of business, and fourth है the number of employee hired by the MSME. बराबर है, तो यहाँ पे देखो आंसर है इसका सेकंड, a score indicating the likelihood of repayment based on financial history. देखिए credit rating assesses the likelihood of repayment by evaluating the MSME credit history, financial stability and overall risk. Next, 18. What is the purpose of using loan convenient in MSME credit guarantee? तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, to reduce the interest rate on the loan, second है to limit the borrower action that could increase rate, third to ensure faster repayment, and fourth है to guarantee additional funding if required. तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, to limit the borrower's action that could increase. देखिए loan covenant are condition imposed to protect the lender by limiting actions such as high value of additional borrowing that could increase the risk of default. Okay. Next, 19. In MSME credit appraisal, which of the following is used to assess MSME ability to handle short-term liability? देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेकंड है करंट रेशियो, थर्ड है प्रॉफिट मार्जिन, एंड फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका करेक्ट आंसर है करंट रेशियो। ओके, देखिए द करंट रेशियो मेजर बिजनेस एबिलिटी टू कवर इट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी when short term assets, a higher ratio suggests good short term liquidity. Okay, next, 20. Which of the following is a non financial factor that can influence the credit worthiness of an MSME? तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड है मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन, थर्ड है डेब्ट लेवल, एंड फोर्थ है वर्किंग कैपिटल। तो सेकंड जो है क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रेपुटेशन, देखो क्या है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर लाइक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशंस आर क्लरिकल इन एक्सेसिंग एन MSME एबिलिटी टू नेविगेट चैलेंजेस एंड एंश्योर बिजनेस सक्सेस। नेक्स्ट, 21. In an MSME credit proposal, if debt service coverage ratio is below 1, is indicates, देखो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, the MSME can comfortably repay its debts. Second है the MSME has more enough than cash flow to cover its debts obligation. Third है the MSME may struggle to meet its debt obligation, and fourth है the MSME has strong cash position. तो थर्ड जो है the MSME may struggle to meet debts obligation, ये क्या है करेक्ट आंसर है। देखिए DSCR below 1 means MSME cash flow is insufficient to cover its debt obligation, indicating potential repayment issue. Okay. Next, 22. The credit worthiness of an MSME
can affect by its independence on a single customer or supplier because it increase the, तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, रिस्क ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है कैश फ्लो स्टेबिलिटी, थर्ड है बिजनेस वैल्यूएबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिजनेस वैल्यूएबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए dependence on a single customer or supplier increase vulnerability to external shocks like loss of business or supply chain disruptions, which can significantly impact the MSME ability to repay the loan. Okay. Next, 23rd, the loan to value ratio, okay, LTV, is a critical factor in accessing MSME credit proposal when, तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग, सेकंड है द एमएसएमई इज अप्लाइंग फॉर वर्किंग कैपिटल लोन, थर्ड है कोलेटरल इज प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन, एंड फोर्थ है द एमएसएमई क्रेडिट स्कोर इज हाई। तो यहाँ पे देखो थर्ड जो ऑप्शन है अपने पास, कोलेटरल इज प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन, क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, देखो द एलटीवी रेशियो कंपेयर लोन अमाउंट टू द वैल्यू ऑफ कोलेटरल, a higher LTV indicate more risk for the lender, especially when collateral is involved. Okay. Next, 24. In the context of MSME credit appraisal, which of the following best describe credit default swap? तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, a type of loan with low interest rate, second है a risk management tool used to hedge against default risk, third है a loan that require no collateral, एंड फोर्थ है अ पेमेंट मेड बाय द बोरोवर टू लेंडर टू एंश्योर रीपेमेंट। यहाँ पे जो सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू हेज अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क, क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मींस सीडीएस इज डेरिवेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प लेंडर प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। ओके, नेक्स्ट 25. During the assessment of MSME credit proposal, the financial ratio analysis include all the following aspect. देखो यहाँ पे है रिटर्न ऑन असेट, सेकंड है करंट रेशियो, थर्ड है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड फोर्थ है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो तीनों जो है वो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहता है, इसलिए आंसर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये देखिए while financial ratio analysis involves metrics such as ROA मतलब return on assets, current ratio, and EVA, economic value added, the production level is more related to business strategy than to the financial health. Okay, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपन डेली यहाँ पे कवर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड भी एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए।